Good afternoon, all of you. Nice to see you now. I know it's kind of lunchtime when I have called you today for the session. So what we will do is, we will begin on things today with chapter 2 on our economic survey. And we first begin with what the chapter wants to highlight. So what the chapter actually, अगर मैं तुम्हें नटशेल में बताऊं कि chapter क्या बताना चाहता है, तो chapter बताना चाहता है that 2014 से 22 के बीच में हमने क्या रिफॉर्म किए और जो रिफॉर्म किए हमने उसका रिजल्ट क्या मिला है हमें, और ऐसे ही इसको कंपैरिजन करते हैं कि ऐसे ही स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुए थे बिटवीन 1998 टू 2002 एंड दे इवन राइट सम रिफॉर्म्स आफ्टर 91, और उनकी वजह से कैसे हमें 2003 से 8 के बीच में ग्रोथ मिला था. इनिशियल रिफॉर्म्स डन इन 1991 till 97, 98, then 98 to 2002, and how then the results we could get with high growth from 2003 to 8. And similarly, the survey talks about how then similarly from 2014 to 22 there has been reform, and then we expect high growth. In fact, they also make a very interesting comparison that 1998 to 2002 some structural reforms were made, but then due to nuclear experiment of India and due to dot-com bust and all, the results were not seen immediately. They were external shocks. And then they compared that from 2014 to 22 also we did some reforms, but because of very high leverage and high NPAs with the banks and the twin balance sheet deficit, and because of COVID pandemic and because of Russia-Ukraine war, the results have not yet come, but they are expected to come in future. तो ये एक अच्छा इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, और आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर काफ़ी इंफॉर्मेटिव है. This is all going to help you out. I have me and my team have tried to give you a list of all the major things. अगर ये PDF हम लोग आपके लिए, ये जो slides हैं इनके भी PDF आपके लिए क्लास के बाद अपलोड कर देंगे हम लोग. So there will be PDF uploaded for these slides also after the class. So my suggestion is that you listen to what I am explaining to you, and that will be sufficient rather than even trying to write down a lot of things. Whatever I write, if you want, you can always write it down. So good afternoon everyone again, and good afternoon to everyone joining me now. It's always lovely to see you all around. Now let's see this. When we talk about the introduction part, they say that new age reforms in the last 8 years that we have done, efficiency and potential growth targeted, reforms to enhance ease of living and ease of doing business, and balance sheet repair of over leveraged financial sector. अब मैं एक एक करके ये एक्सप्लेन करूंगा आपको स्लाइड्स के साथ, तो अभी वेट करना पड़ेगा आपको, बट ये मेन थीम्स हैं कि क्या क्या चीजें पिछले 8 साल में की गई हैं और उनका हमें क्या ग्रोथ मिलेगा. तो दैट इज व्हाट सर्वे स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट. तो न्यू एज रिफॉर्म्स का मतलब ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पार्टनरशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर. ये ईज ऑफ ये न्यू एज रिफॉर्म्स की बात है. जैसे इवन सर्वे नहीं बोलता, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, इवन स्कीम्स लाइक उज्ज्वला योजना, स्कीम्स लाइक स्वावलंबन, schemes like SLBP in which LED bulbs were distributed among people and street lights were made LED enabled, जल जीवन मिशन, ये सब न्यू एज रिफॉर्म्स की बात है. क्यों? सर्वे आपको पहले समझाएंगे और मैं भी आपको उसके थ्रू लेके जाऊंगा. पहले तो मैं एक रूपरेखा दे रहा हूं. आई एम गिविंग यू अ फ्रेमवर्क. द सर्वे फर्स्ट टॉक्स अबाउट हाउ initial reforms were in capital sector, initial reforms were in commodity market, and those reforms gave us some growth. How new age reforms will be in ease of living, ease of doing business, partnership between private and government, developing better infrastructure, and so on, and that will give us growth. So with that perspective you should understand the survey part. Good afternoon everybody, I'm doing good, thank you for asking. Let's see this then. So what are the chapter overview जो मैं तुम्हें अभी दे रहा था, brief history of India's product and capital market reforms, what were the major reforms in last 8 years, shocks faced by Indian economy during last 8 years, and what is the medium term growth possibility that we can have. इन्हीं 4 parts में ये chapter divided है. ऑलराइट, आपको ये समझना है, जो 4 parts में ये chapter divided है वो यही है. इंडिया की प्रोडक्ट और कैपिटल मार्केट के रिफॉर्म्स क्या हुए, मेजर रिफॉर्म्स पिछले 8 सालों में क्या लिए गए, हमें दिक्कतें क्या सामना करना पड़ा पिछले 8 सालों में, और फिर मीडियम टर्म ग्रोथ क्या है हमारा पॉसिबिलिटी. और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रीलिम्स ऑप्शनल मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से
both for economics optional, geography optional, political science optional, anthropology optional, and even for GS paper 3, that what is the medium term way you look. जब आपसे सवाल पूछेंगे ना, can India be a $10 trillion economy, can India be a $15 trillion economy, from here the points can be picked up. So that is a part of our story. Then let's see this. We begin with this. The story begins that we had the crisis in 1991, and with the crisis of 1991 we made some reforms. What were these reforms that we started with? We made reforms, macroeconomic imbalances. So remember, when we talk about these macroeconomic imbalances of late 80s and early 90s, ये macroeconomic imbalances हैं, high fiscal deficit. ये सर्वे नहीं बताते, ये मैं आपको बता देता हूँ, स्पेशली जो भी लोग आप अनइनिशिएटेड हो, जिन्होंने इकोनॉमिक्स ज़्यादा नहीं पढ़ी अभी, उनको ये आइडिया लग जाएगा कि मैक्रो इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस का मतलब हाई फिस्कल डेफिसिट दैट वी हैड इन इंडिया, हाई इन्फ्लेशन दैट वी हैड इन इंडिया, हाई करंट अकाउंट डेफिसिट दैट वी हैड इन इंडिया, और उसके अलावा हाई फॉरेन डेट, स्पेशली शॉर्ट टर्म फॉरेन लोन्स. ये थे मैक्रो इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस, the combined deficit, inflation, unsustainable current account deficit and high foreign debt. ये fiscal deficit जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का था, ये 12.6% ऑफ जीडीपी था, 8.4% ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 4.2% ऑफ जीडीपी फॉर स्टेट गवर्नमेंट. ये हमारा फिस्कल डेफिसिट था उस 1990 में. ऐसे ही इन्फ्लेशन, if we take consumer price index of industrial workers, it was recorded at 11% in 1990. तो ये हमारा इन्फ्लेशन का लेवल था. और वैसे ही करंट अकाउंट डेफिसिट was greater than 4% of GDP. और इनके साथ आप ऐड कर दो हाई फॉरेन डेट, और उसके बाद हो गया गल्फ वॉर, और इस सब ने हमारी हालत पतली कर दी. तो हमें रिफॉर्म करने पड़े of 1991. So survey begins with those reforms. That our reform was, or our response was, LPG reforms. Our response was LPG reforms. What were these LPG reforms? We went for trade and investments liberalization. We removed licensing. We removed reservation for public sector enterprises. We went for import liberalization. We removed quantitative restrictions on imports. All these things we did, and that was trade liberalization. Investment liberalization we did. We simplified the Companies Act. We also went for higher investment possibilities. We allowed FDI in India, and all that we started doing. Then entry restrictions were simplified in India. Automatic approval policy for FDI was brought up to 51%. Later on, in certain sectors, it was taken to 100%. तो FDI liberalization किया गया. Exchange rate was made flexible and allowed to depreciate. In fact, India shifted from fixed exchange rate in 1991 to managed floating exchange rate 1994 March. Managed floating का मतलब exchange rate will be determined by the market, but RBI will be allowed to intervene in case of any speculative attack. Exchange rate market decide करेगा, लेकिन अगर RBI को लगा कि कोई speculative attack हो सकता है, तो RBI intervene करेगी उसके अंदर. So exchange rate will be determined by the market, but RBI was allowed to intervene in case they suspected any speculative attack. कि कोई जानबूझ के अगर मेरी करेंसी को नीचे वैल्यू पे ले जा रहा है या ऊपर वैल्यू पे ले जा रहा है, तो आरबीआई को इंटरवीन करना अलाउड होगा. जब आप ये पढ़ते हो रूपी फुली कन्वर्टेबल ऑन करंट अकाउंट, इट मींस
whatever money you bring into India on current account will be converted into rupee on market exchange rate basis. जो पैसा आप भारत में लाओगे करंट अकाउंट पे वो डॉलर से रूपी में या येन से रूपी में या यूरो से रूपी में कन्वर्ट होगा on market exchange rate basis. For example, if you bring money by exporting goods, if you bring money by exporting services, if you bring money by remittances, जैसे तुम बाहर गए, बाहर से मेरे लिए $2 लाख का गिफ्ट भेजा, तो वो मैं रूपी में कन्वर्ट कर सकता हूँ इंडिया में अब on full current account convertibility basis. That was allowed. Earlier it was not allowed, it was fixed exchange rate. So remittances, exports of goods, exports of services, factor income from abroad. These are all inflows on current account. Inflows on current account, all convertible at market exchange rate. So full current account convertibility. और अगर capital account की बात करें तो partial इसलिए क्योंकि हमने restrictions बना कर रखे. Restriction like you are not allowed to transfer beyond a limit outside India. Foreign investors were not allowed to bring money beyond a limit into India. FDI up to a limit was allowed in certain sectors. For example, even today in insurance, we don't allow more than 74%. Or in e-commerce with inventory model, we don't allow more than 49%. So you see restrictions on FDI, restrictions on FII, ये capital account के components हैं BOP में. तो उन पे restriction था. तो ये किया गया. लेकिन इंडिया पहले बिल्कुल क्लोज था, ट्रेड कम करता था, इन्वेस्टमेंट अलाउ नहीं करता था. ये लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अपनानी हमने शुरू की, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी अपनानी शुरू की और प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी अपनानी शुरू की. वी वेंट फॉर लिबरलाइजेशन, वी वेंट फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड वी वेंट फॉर ग्लोबलाइजेशन. देन वी टॉक अबाउट कंटिन्यूटी इन रिफॉर्म्स. अब ये थे रिफॉर्म्स डन between 1999 and 2004. अब ये आप समझिए इकोनॉमिक सर्वे अभी हमारी करंट सरकार एनडीए की है, इस समय भी एनडीए की सरकार थी, तो पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं कि देखो उस समय भी हमने ये रिफॉर्म्स किए, अभी ये रिफॉर्म्स कर रहे हैं और ये सही भी है. Most of the structural reforms in India have happened. If I leave the 92 to 96, 97 Narasimha Rao ji's government, 91 to 96, then most of the structural reforms have happened when NDA government has been in power. You know, so and you know what happens is that they do the structural reforms, and then the next party comes to power, and the structural reforms show their impact then, and growth happens, and people say, oh look, growth happened with this party. So it's a travesty at times. But yes, of course. But with the UPA governments, what we saw was they did not do structural reforms, but they work more on human resource development. For example, they introduced Manrega, or for example, they introduced Rajiv Gandhi Gramin Vidyutikaran Yojana. So, you know, it's kind of a balance in Indian politics, that one side will go a lot towards social sector development, another side will go more towards structural development. So fair enough, that is how it has been. So what I say here is, तो हम क्या रिफॉर्म्स लेकर आए. एक था इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट्स वर फर्दर लिबरलाइज्ड बाय लेट 90s. मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं. फेमा इन 1999, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1999. सो मोर लिबरलाइजेशन फॉर इन्वेस्टमेंट. ऑलराइट, एक और तुम्हें एग्जांपल देता हूं इसी पे. डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन 1998 फॉर्मलाइज कर रहे थे डिसइन्वेस्टमेंट को सरकार पहली बार. उसके पहले फॉर्मलाइजेशन ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट नहीं था. सो डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन 1998, यू नो. सो डेडिकेटेड मिनिस्ट्री ऑल्सो फॉर डिसइन्वेस्टमेंट. अ मिनिस्ट्री ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट वॉज क्रिएटेड in 1998. So there were changes across. New telecom policy was brought in 1999, which allowed for CDMA mobile technology, जिससे Reliance और Tata घुस पाए थे मार्केट में. You know, and that revolutionized the market. Lot of experiments then happened, and after that, Indian market, telecom market, never looked back. Till 1999, the even on mobile phones, the incoming call charges used to be 8 rupees per minute, and outgoing call charges used to be 16 rupees per minute. The new telecom policy allowed for revenue sharing, allowed for license fee to be reduced, allowed firms to do more free business, and suddenly the telecom charges started coming down, new business started developing, and that is all what that survey is reminding us of. Of course, this was the phase. अगर मुझसे आप पूछो
तो 1998 टू 2003 वो फेज था जिसमें हमने सबसे ज्यादा प्राइवेटाइज किया। 24 पब्लिक सेक्टर कंपनियां प्राइवेटाइज हुई थी 1998 से 2004 के बीच में। ऐसा कभी नहीं हुआ। अभी जैसे हमारे करंट सरकार के बारे में कहा जाता है कि प्राइवेटाइज कर रहे हैं, सब कुछ प्राइवेटाइज हो रहा है, बट एक्चुअली वो हो नहीं रहा। दो कंपनीज प्राइवेटाइज हुई हैं, एयर इंडिया और नीलांचल इस्पात। देयर इज नो अदर कंपनी व्हिच हैज बीन प्राइवेटाइज्ड। इवन इकोनॉमिक सर्वे इन दिस चैप्टर itself, and I'll gradually teach you that, doesn't talk about privatization. They talk more about monetization. So the government priorities may be changing, but that was a government which was actually going for reforms. They were privatizing companies like Hindustan Zinc, companies like Bharat Aluminium, Balco tha ye, companies like VSNL. So they were privatized in those days. Maruti Udyog actually was given to to Suzuki. It was a 50-50 venture. Then this was the time when government sold 17% further to Maruti. So that was another thing that came across. And then of course FRBM Act 2003 that comes across to discipline the government. FRBM Act 2003 के साथ एक और बात समझना आप, Ways and Means Advances in 1997. तो पूरा बैंकिंग इंटरेस्ट रेट डीरेगुलेशन 1997, ओपन मार्केट ऑपरेशंस बिकमिंग द डोमिनेंट थीम एंड लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी 1997। तो बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म हो रहे थे, फिस्कल सेक्टर में रिफॉर्म हो रहे थे, टैक्स रेट्स को रैशनलाइज किया जा रहा था। ये इंडिया का फर्स्ट फेज था रिफॉर्म का 1991 से लेकर 2003 तक। ऑलराइट, दिस वाज इंडियाज फर्स्ट फेज ऑफ रिफॉर्म्स दैट वी वर टॉकिंग अबाउट। देन द सर्वे सेज दैट the problem was that offshocks overshadowed the reform between 98 to 2002. सवाल यही उठा था उस वक्त भी कि भाई रिफॉर्म जब इतने हुए तो ग्रोथ क्यों नहीं हुआ उतना, ग्रोथ क्यों कमजोर रहा। और ये था 1998 to 2002 growth was relatively timid. So growth was timid because India's nuclear test led to sanctions. So FDI decreased. In fact, for 1.5 years FDI was almost frozen in India. 2 successive droughts happened in 2000 and 2002. And end of technology boom. This was actually what is called the dot-com bust. Share market declined. Due to fall in valuation of tech companies. इसमें एक बात सर्वे मेंशन नहीं करते क्योंकि वो पहले हो गया था, लेकिन उसका इंपैक्ट हमें मिला। आप कहीं साइड में हो सके तो लिख के रखना जरूर। ईस्ट एशियन क्राइसिस ऑफ 1997, उसका इंपैक्ट 2-3 साल तक चलता रहा। फॉर 2-3 इयर्स बैंकिंग हिला हुआ था, इन्वेस्टमेंट्स हिले हुए थे, एफडीआई, और साथ में हमने न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स भी कर लिए थे। तो डबल वैमी के थ्रू हम थे। सो बिटवीन 98 and 2002 दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग। एंड देन द सर्वे सेज दैट द इंडियाज पार्टिसिपेशन हैपेंड इन ग्लोबल बूम। यहां से हमें ग्रोथ मिलना शुरू हुआ। ग्लोबल एवरेज था 4.8%, इंडिया ग्रू एट 8% पर एनम। यहां मैं तुम्हें एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, सर्वे नहीं बताता पर तुम ऐड कर सकते हो अपने आंसर में, दैट एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया ग्रू एट 20% पर एनम। तो ये जो पीरियड का ग्रोथ था वो इंडिया के स्ट्रक्चर में जो एक्सपोर्ट प्रमोशन हो रहा था उसका बड़ा तगड़ा ग्रोथ था। दिस ग्रोथ वाज हेवीली बेस्ड ऑन दैट। साथ में इंडिया ने 98 से 2002 तक जबरदस्त मेहनत की थी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेंट्रल रोड फंड फॉर हाईवेज, न्यू टेलीकॉम पॉलिसी फॉर टेलीकॉम, Central Electricity Regulatory Commission, setting up state electricity regulatory commissions, fixing up discom issues for electrification. पहली बार हमने अनबंडल किया था। पहले जनरेशन कंपनीज, ट्रांसमिशन कंपनीज, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज इकट्ठा होती थी। 1998 में हमने ये शुरुआत की एंड बाय 2001 वी अनबंडल्ड दीज कंपनीज विद द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी एक्ट 2003। तो इसके थ्रू हमने किया कि जेनकॉम का काम अलग होगा, अब जनरेशन कंपनी अपना काम करेगी, ट्रांसमिशन अपना और डिस्ट्रीब्यूशन अपना। तब हमें पता चलना शुरू हुआ कि कैसे हम एक अच्छा छड़ी लेते, पट से मारते और कहते आ बिजली इधर और मैं बिल नहीं दूंगा। ये हरकत पता चलनी शुरू हुई 2003 के बाद। ज्यादा हमें पता था चोरी होती है, बट द एक्सटेंट वी डिड नॉट नो, एंड दैट एक्सटेंट वी गॉट टू नो ओनली व्हेन वी अनबंडल्ड द जेनकॉम,
Transcom and Discoms to understand how distribution companies are running into losses because the electricity that they supply, people don't pay for that. So these were major reforms that were done in those time periods, and that was the result we started getting in this period when the world became more confident about us, and when the world regenerated the growth momentum. It meant FEMA was giving us good result, FDI inflow was tremendous, capital inflows. We had domestic factors which were conducive. For example, better rainfall, increased investor sentiment, and this was crowding in because of the expenditures that were done and reforms which were done in the past. And higher consumption growth because people were getting more confident about level of economic growth. So higher consumption growth, ये सारी चीजें कर रहे थे हमें, या हमें लेके जा रहे थे towards development, domestic factors developing fast. But exports, I repeat, were playing a big role. Foreign investment inflow was playing a big role, and India did very well from 2003 to 2008. तो एक सर्वे ये हाईलाइट करते हैं. अब सर्वे कहते हैं कि जो नया रिफॉर्म है, ये अब बात करते हैं रिफॉर्म बिटवीन 2014 टू 2022 कि जो नया रिफॉर्म है वो किस तरफ फोकस्ड है. वेयर इज द न्यू रिफॉर्म फोकस्ड? द न्यू रिफॉर्म वाज फोकस्ड अक्रॉस four things, or is focused across four things. Creating public goods. Creating public goods means more roads, better telecom, more electrification, like say 𝐡𝐞𝐫𝐞 हर घर योजना is electricity for all, you know, Ujjwala Yojana, LPG cylinder for all, or schemes like Gram Sadak Yojana, Jal Jeevan Mission with targets of हर घर नल से जल, you know. So all these are schemes about creating public goods, and those public goods which not only improve doing business but also improve ease of living. That is the new method of growth that the government is trying to characterize. कि सिर्फ ease of business तो कर ही रहे हैं, साथ में ease of living भी बढ़ाएं. लोगों को पानी लेने के लिए 4 किलोमीटर न जाना पड़े, लोगों को बिजली के लिए परेशान ना होना पड़े, लोगों के घर तक सड़क पहुंची रहे. तो ये ease of living की भी बात हो रही है. स्वच्छ भारत योजना, ease of living again, that is sanitation facility for all, you know, drainage facility across. इस साल के बजट से जैसे सरकार ने कहा मैनुअल स्कैवेंजिंग बंद करेंगे, तो ये ईज ऑफ लिविंग की बात भी होती है अपार्ट फ्रॉम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. सो क्रिएटिंग कैपिटल गुड्स. Another is agricultural productivity, and I'll discuss these in detail with you. But again, schemes like ENAM, schemes like Operation Green, schemes like PM Kusum, schemes like PM Asha, all that to promote farmers' income or double farmers' income and promote things across on that. I see one of you asking me what is FERA, FEMA. Foreign Exchange Regulation Act is FERA and Foreign Exchange Management Act is FEMA. So Avnish, what you can do is just do a normal Google check and you will get FERA, FEMA for that. So don't worry at all regarding that. All right, then and another thing that you need to keep in mind, you know, is that we just need to make sure that basics on economics are done before you go into survey. जैसे फेरा फेमा अगर नहीं जानते तो सीख लो. प्रीलिम्स में 3 ही महीने हैं तो तुम्हें पता होना चाहिए कि फेरा और फेमा क्या है, ताकि तुम्हें खतरा ना हो वहां पर. ऑल राइट, और बाई चांस अगर आपके पास मेरा ईमेल आईडी है तो मुझे मेल कर लेना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. कमिंग टू दिस देन, अनदर इज प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन. इकोनॉमिक सर्वे एक बहुत सही बात कहते हैं दैट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मेक प्राइवेट सेक्टर अ पार्टनर in growth, so giving them opportunity like decriminalizing laws and making them civil offences, or removing unnecessary compliance burden on private sector, simplifying Companies Act, you know, introducing more things for corporate social responsibility, introducing better corporate governance. So that is private sector as partner. और अभी मैं आपको ये points explain करूँगा. इन सब से कहते हैं जब अगर ये हो, and trust-based governance, that is people trusting the government, that government is for their welfare, reporting any anomalies to the government, allowing things to grow better. तो अभी ये बात करेंगे, but सरकार सर्वे का ये कहना है कि अगर ये चारों हो तो रिसोर्स एलोकेशन एफिशिएंट होगा. आप वहां रिसोर्स लेके जा सकोगे जहां ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपको फीडबैक्स मिलते रहेंगे. ऑलराइट,
that you will keep getting your feedbacks, so resource allocation will be better, and then enhancing productive potential of economy and its people. That's another thing, that जैसे resource allocation better होगा. For example, if people get electricity, if people get roads, if people get clean drinking water, if people get good education, Samagra Shiksha Abhiyan, if people get good healthcare facility, Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, community wellness centers, Ayushman Bharat scheme. So if these things happen, then the allocation of resource will be better and people will be prepared to grow faster for a longer period of time. So that is the idea of enhancing productive potential of economy and its people. प्रोडक्टिविटी पोटेंशियल का मतलब होता है उत्पादन करने की क्षमता. इकोनॉमी के अंदर जो लोग हैं उनके अंदर जो प्रोडक्शन करने का कैपेसिटी है उसको बढ़ाने की बात हो रही है. That how to make sure that it's a people-centered approach. How to make sure that people can be upgraded quickly. And they say that that is the underlying framework of reforms. Now within that, it's about creating public goods to enhance opportunities and efficiency and ease of doing business. So one thing is quantum leap in capex. As I told you last class also, 2.5 times increase in capex. और कैपेक्स का डिस्कशन पिछली क्लास में कर चुका हूं, तो यहां ज्यादा आपको नहीं ले जा रहा उसमें, लेकिन इसके वजह से सरकार ये कोशिश कर रही है कि क्राउडिंग इन हो, मोर इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट, more investment by government in physical infrastructure like road, railway, electricity, communication, and so on. Social infrastructure like housing, sanitation, drinking water, etc. and human development. Education, healthcare, etc. So the idea is if you promote these, these, then you are developing things much better. So इसीलिए कहते हैं that this will be crowding in private investments and growth in coming decades. तो public goods के creation से private sector को incentive मिलेगा कि अच्छा infrastructure बन गया, school colleges बन गए, hospitals बने, लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ी, सोशल इंडिकेटर्स बेटर शो किए, तो प्राइवेट सेक्टर को इंकरेजमेंट मिला कि वो भी इन्वेस्ट करें, क्योंकि अब वो उम्मीद करेंगे कि डिमांड बढ़ेगा देश में. सो दे विल एक्सपेक्ट दैट डिमांड विल राइज एंड दे विल बी एनकरेज्ड टू पार्टिसिपेट बेटर. दैट इज द आइडिया, दैट इज व्हाई क्राउडिंग इन. दिस इज बेस्ड ऑन reduced cost of doing business and expected increase in demand. That is the basis of crowding in. Reduced cost of doing business and increased demand expectations, so that will induce private sector to invest. एक और बहुत अच्छी बात सर्वे कहते हैं, आगे चलकर बात करेंगे उसके बारे में, कि पिछले 10 साल में जो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर लोन का बोझ था, जो लिवरेजिंग कहते हैं जिसे, हाई डेट ऑन प्राइवेट सेक्टर, दे हैव बीन एबल टू रैशनलाइज इट. सो नाउ दे आर इन अ पोजीशन वेयर दे कैन बिल्ड अपॉन इन्वेस्टमेंट बेटर. पर उसके कुछ उसमें डाउट्स भी हैं जो मैं आपको कवर करके बताऊंगा, कुछ उसके अंदर दिक्कतें भी आ सकती हैं. अब ये है दैट व्हाट आर द डेडिकेटेड प्रोग्राम फॉर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी बात मैं पिछले स्लाइड पे कर रहा था. दीज आर द डेडिकेटेड प्रोग्राम फॉर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. रोड कनेक्टिविटी भारतमाला, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सागरमाला, electrification again सौभाग्य is a typical scheme. National Electricity Act amendment, which allows for multiple suppliers of electricity. That's another thing. New airports to be operationalized. That is a part of combining Udan
and new airport development, and then national infrastructure pipeline, national asset monetization pipeline, even Gati Shakti kind of programs. All this is about developing physical infrastructure development. Gati Shakti, of course, is a digital platform which will allow and enable good infrastructure development. But these are programs for physical infrastructure. Then programs for digital infrastructure, and mind you, this is public good creation इन डिजिटल स्पेस. याद करके रख लोगे इन चीज़ों को, ये बहुत काम आएंगे आपको आंसर में रेफरेंस देने के लिए. यू मस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स, यू नो, बिकॉज दे विल हेल्प यू इन गिविंग आंसर मच बेटर. लिवरेज मीन्स डेट टू इक्विटी रेशियो. कितना आपने लोन लिया उसके मुकाबले आपके शेयर्स कितने आपने इशू कर रखे हैं मार्केट में. Yes, efficiency is related to policy implementation, but if you see, Prashant, if you look at the progress of Bharatmala and the progress of Sagarmala and all, then we see that the efficiency has also shown some positive things in India. Now, when you look at this JAM Trinity, increasing India's bank account given to people from 53% to 78% in the last 5 years. ये numbers याद रख लो, ये चीज़ें help करती हैं हमें. Similarly, eKYC helps in ease of participation. मैं एक कस्टमर हूँ, मैं बैंक के अकाउंट तक नहीं जा सकता, मैंने इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर सर्विस सर्व कर दिया, मुझे बैंक के अपने ब्रांच तक नहीं जाना अब अपनी KYC कराने को, नो योर कस्टमर, अपने वेरिफिकेशन कराने को. दैट हेल्प्स इन keeping people in banking system. It also helps in encouraging people to be a part of banking system. क्या फायदा होगा उससे? Formalization of loan बढ़ता है, savings mobilization बढ़ती है. तो इसीलिए बैंकिंग को फॉर्मलाइज करना, ज़्यादा लोगों को बैंकिंग में लाना हमेशा फ़ायदेमंद होता है. If you are formalizing banking, bringing more people into banking, it's beneficial. You can mobilize savings more easily, and you can include more people in the interest rate structure also. That is formal lending. Then of course digital signature, which means that I can be a corporate holder, I have to pay my tax, I do my digital signature, pay my tax, filing becomes easier, reporting becomes easier, data keeping becomes easier. So digital signature is that, helps in doing that. Similarly, DigiLocker, all my documents at one place. I don't have to carry my license, I don't have to carry my GST number, I don't have to carry my say mark sheet and certificates. All these things can be in my DigiLocker. Wherever I need it, I can go to my DigiLocker, show it to people. Again, further adds to ease of living as well as ease of doing business. Then UPI, we all know the success story of UPI, how UPI is now the largest trading platform or trade-induced platform that we get for money transfer. And then ONDC, इसकी बात मैं आपसे पिछली क्लास में कर रहा था. That is open network digital system that we are creating. That एक digital platform बनाएंगे जिसपे Flipkart भी आ सकते हैं, Amazon भी आ सकते हैं, सभी अपने एक जगह पे रहेंगे. और ये ओपन नेटवर्क होगा. तो इससे क्या होगा, जो छोटे किसान, छोटे प्रोड्यूसर भी हैं, मध्यम वर्ग के प्रोड्यूसर हैं, micro enterprises, small enterprises, medium enterprises, they will not have to pay a lot of fee to get established on a portal, and they will be able to sell their product through the popular portals, and that will help in growing the things much better. ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉर्पोरेशन का एक चीज़ है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे लोग इसको ज्वाइन करते हैं या नहीं, वरना ये डिजिटल कॉमर्स सरकार को फिलिप देना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल, इफ गवर्नमेंट कैन यूज दिस थ्रू इट्स जेम पोर्टल, गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस, तो अगर गवर्नमेंट जेम को ONDC का पार्ट बना ले और गवर्नमेंट एनकरेज करे छोटे प्लेयर्स को, जैसे स्नैपडील इज नॉट एज बिग एज अ फ्लिपकार्ट और एन अमेजन, सो एनकरेजिंग स्नैपडील एंड अदर स्मॉल प्लेयर्स to come to this ONDC, and then encourage the small players in manufacturing and service to come to ONDC, it will create their own unique ecosystem, जहाँ सबको पता होगा कि चीज़ें अगर चाहिए इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड, थोड़े सस्ते या कंपोनेंट सप्लाई, तो यहाँ से मिल सकता है. Another benefit of this digitalization, things like UPI, ONDC, is formalization is quicker. अब मैंने ONDC के थ्रू कुछ बेचा, तो इसका मतलब मुझे पेमेंट भी इलेक्ट्रॉनिक में मिलेगा और ये सब रिकॉर्डेड होगा, रजिस्टर्ड होगा, GST पेमेंट इमीडिएट होगी. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं फॉर रजिस्टर्ड सिस्टम इन इकोनॉमी एंड फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी. Then of course account aggregator,
that is the multiple accounts that are generated at various places. One place they can be aggregated on the digital platform and it can easily be verified even if I am someone who has multiple companies thrown over multiple accounts. So account aggregator business, and then the GSTN, the GST network which records all transactions in GST through the portal GSTN. E-way bill we all have seen, and I will teach you this more in paper in third chapter, that how e-way bill makes sure that evasion can be stopped and duplication of taxation can be stopped. Plus recognition is complete now, formalization is easy. As soon as the commodity starts transporting itself, the information is available with the tax network and better tax collection takes place due to that. So एक बात मैं तुम्हें यहाँ बताना चाहूँगा, ये physical infrastructure development से efficiency बढ़ी, इससे ease of doing business बढ़ा, ease of living बढ़ा, और digital infrastructure से भी यही चीजें होनी शुरू हुई. और जैसे ये scale up होता जाएगा, as this goes on becoming scaled up, it will include more and more people into the system. आज आप देखेंगे street vendors के पास आपको UPI दिख जाएगा, payment facility. Now that is an improvement in India. हम कभी-कभी ये समझते नहीं हैं कि कुछ improvement हमारे सामने हो रही हैं जो हमें नजर नहीं आती. आप सोचिए, एक समय था इंडिया में लोग हाथ से खींचते थे लोगों को रिक्शा पे, वो समय बदला, लोग पैडल रिक्शा पे आए, लेकिन अभी भी मजदूरी थी, शरीर को तंग होता था, ट्यूबरक्यूलोसिस होता था लोगों को, और आज ई रिक्शा के ऊपर हम मूव करते जा रहे हैं. ये इंप्रूवमेंट है. एक समय था जब अपर मिडिल क्लास के लोग कूलर में रहते थे, एयर कंडीशन सोचने का सवाल ही नहीं था. अपर मिडिल क्लास के लोग भारत में स्कूटर में, मोटरसाइकिल में घूमते थे. ये 1988-89 की बात कर रहा हूँ इंडिया की मैं. ज्वाइंट सेक्रेटरी गेटिंग पेड 2900 रुपीज पर मंथ. ये इंडिया था 88-89 का. आज लोअर मिडिल क्लास मोटरसाइकिल पे घूमता है, स्लम्स में कूलर दिख जाते हैं आपको. ये बात समझाना चाह रहा हूं दैट दिस इज अपग्रेडेशन ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड, जो हम नोटिस ही नहीं करते क्योंकि ये इतना स्लोली हुआ, लेकिन इतने परवेसिवली हो गया कि हम समझे ही नहीं कि ये बदलाव आ गया हमारे देश में. So this is what we have to understand, that when we do systemic reforms, when we do structural changes, the changes may not be visible immediately, but when you look back 30 years and see, oh look, what did we do and what is the life today, and you will see that, oh, life has changed tremendously in these years. And that doesn't only have an impact on economy, it then has impact on social mechanisms, political systems, and so on. Don't be surprised that development is an issue in elections in Bihar. बिहार में नहीं तो डेवलपमेंट इशू ही नहीं होता था, उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट इशू ही नहीं होता था. अब ये डेवलपमेंट क्यों इशू हुआ? ये डिजिटल सिस्टम की वजह से. बाकी जगह की तरक्की लोग कम से कम डिजिटल सिस्टम में यूट्यूब पे देखने लगे, कैसा होने लगा. जो अच्छे मिनिस्टर्स भी हैं, आप गडकरी जी को देखेंगे, कुछ भी इनॉग्रेट करेंगे, फटाफट यूट्यूब पे उनकी जो मिनिस्ट्री है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज वो पुट करती है. तो बाकी जगह भी लोग देखते हैं, देखो ये तरक्की हो रही है, डिमांड करते हैं मुझे भी दो. This is good thing. This is aspirational system, creating a country with development. That's the good idea about these kind of infrastructure programs. Then of course, when we talk about platform for unified digital interface, ये सब public goods के example हैं आपको जो मैंने दिया है, जो digital system में है. Again, I will be sharing these PDFs with you in the PDF form with you, all these slides. ये तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, तुम्हें याद रहनी चाहिए ये बातें, क्योंकि ये तुम कोट कर सकते हो कि ये चीजें की गई हैं जिससे बेनिफिट एक्सपेक्टेड है. और ये डिजिटल पब्लिक गुड्स की बात है. फॉर एग्जांपल, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम फॉर बिजनेस अप्रूवल फैसिलिटी, जन समर्थ पोर्टल फॉर मेकिंग श्योर दैट सेंट्रल गवर्नमेंट क्रेडिट कैन बी गिवन टू पीपल, स्पेशली द वंस who are not getting easy credit from the market. Then similarly, Umang app, that is for ease of doing business, particularly an interstate business that you are doing. E-Shram portal, where workers can register themselves. Imagine, more than 29 crore workers have registered themselves over here. Survey 28 crore 40 lakh बताता है. मैं आज चेक करके आ रहा हूँ इसलिए आपसे बोल रहा हूँ. ये अब 29 करोड़ 10 लाख वर्कर्स हो गए हैं जो रजिस्टर कर चुके हैं खुद को ई-श्रम पोर्टल पे. So more than 29 crore workers have registered themselves on e-Shram portal, which means now we will be able to know the unorganized sector workers, where are they located, which sector they are working in, how they are growing in that sector, and what is the wage rate on an average that they are paid, what kind of social security they will need. All this planning can be done with things like an e-Shram portal. And then of course PM Gati Shakti. It's a GIS based platform to make sure that there is real-time data available on all infrastructure projects which are going on, so that duplication can be avoided, costs can be reduced, speed can be increased. So that is why the idea is to have coordination in implementation as well as planning. This is the basic idea that we talk about when we talk about the platform for unified digital interface. तो ये results मैं आपको बता रहा था. Greater financial inclusion,
greater formalization, ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस। सोचो अगर गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस से चीजें बिकती हैं तो पता होगा किस बेसिस पे बिकी, पेमेंट कैसे की गई, कौन से बेनिफिशियरी थे, इसी को ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। So once this transparency comes, then nepotism, bribery, delays in payment, all this can be controlled. Then of course ease of doing business and living has improved, supply chain and reduction in logistical cost because real-time availability is there of information, infrastructure is better or improving due to jam trinity kind of a thing, Jan Dhan, Aadhaar and mobile. People don't have to go from one place to another to do banking. They can be at one place and get it. Money can be transferred directly into the bank account. All that makes a huge difference in overall ease of doing business, ease of living, and cost of living coming down. Then we talk about trust-based governance. Now, when we talk about trust-based governance is just to tell you, तुम्हें clarity रहे, पहले बार यहाँ से बात कर रहा हूँ, creating public goods, ये discussion किया हमने, क्रिएटिंग पब्लिक गुड्स में क्या बातें की, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, और फिर क्या बातें की, यूनिफाइड डिजिटल इंटरफेस एज पब्लिक गुड्स इन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द रिजल्ट ऑफ दैट। ऑलराइट, तो तुम भी इसको ऐसे ही सोचना और इनको आंसर में यूज करोगे, देन यू विल बी एबल टू कन्विंस द एग्जामिनर दैट ओके लुक, आई एम वर्किंग ऑन व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच माय गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू टेक मी। Then of course we have the trust-based governance. Now see, first of all, when we say trust-based governance, that means trust in legislations of country, trust in effective contract enforcement, by quasi-judicial एंड जुडिशियल सिस्टम। जैसे अभी जीएसटी ट्रिब्यूनल बनने की बात है, जैसे हमने एनसीएलटी बनाया है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जैसे हमारे यहाँ कोर्ट्स फंक्शन करें, तो इनसे पता चलता है कि ट्रस्ट बने या ना बने, यू नो, दैट इज द आइडिया। Okay, I see one question from you that for in e-Shram portal are not appropriate. For example, many who are unemployed or do not do nothing, registered in category of agriculture, etc. No, Naveen, समझना इस बात को. Those who are unemployed are registering themselves in the category of agriculture or small tutors or small workplace workers because they are not satisfied with the employment. That's unorganized sector workers. Unemployed है क्योंकि वो उसमें काम नहीं करना चाहते जिसमें करने को मिल रहा है। उससे भी हमें एक डेटा मिलता है कि कौन से तरह की नौकरी दिलवाएं लोगों को ताकि ज्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सके। I hope Naveen you will get the point I am making. So no harm in that. Also think of it, even if out of 28 crore people who are there, even if 3 crore are like this, you have some real-time information on 25 crore people. So we should not throw the baby out with the bathwater. You know, ये important है, बच्चे को नहलाया तो पानी फेंकिए, बच्चे को नहीं। तो दिक्कत अगर आ रही है पानी की वजह से तो पानी को हटाने की सोच सकते हैं, लेकिन हम बच्चे को फेंकने की बात करते हैं अगर हम कहते हैं ई-श्रम पोर्टल इज नॉट गुड। सो यू कैन से दैट ओके, डिफिकल्टी तो हर जगह होगी। अभी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो कुछ बातें हो सकता है 90% समझ भी पाए, 10% नहीं समझ पाए, तो दोबारा यूट्यूब देख के समझ लोगे। पर कहोगे बकवास है, नहीं पढ़ूंगा, तब तो कुछ भी नहीं समझोगे ना। तो इसीलिए कह रहा हूं दैट हमेशा दिमाग में रहना चाहिए दैट इफ समथिंग इज क्रिएटिंग बेटरमेंट एंड इफ समथिंग इज इंप्रूविंग द सिचुएशन कंपेयर्ड टू व्हाट वाज, देन दैट शुड बी डन। ये हमेशा गोल्डन रूल पॉलिसी के याद रखोगे। इफ व्हाट इज बेटर देन व्हाट वाज, व्हाट इज गुड। यू नो, नोबडी कैन मैच आइडियल वर्ल्ड। आप याद करो, हम 12th में होते थे, 10th में होते थे। मैं जब 12th में था ये मेरे साथ होता था। मैं पढ़ाकू बच्चों में से एक था। घर लौट के आता था, टीवी खोल दिया, मदर आ जाती थी, बोलती थी तुम्हारे उम्र के सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं सोचता था कौन है ये बच्चा भाई जो मेरी उम्र का है और पढ़ रहा है, क्योंकि पढ़ने वाला तो मैं हूं। फिर रियलाइज किया ये बच्चा है आइडियल वर्ल्ड वाला बच्चा जो 24 घंटे पढ़ सकता है।
सो इफ यू कंपेयर एनी पॉलिसी टू आइडियल वर्ल्ड, तो वो 24 घंटे पढ़ के दिखा देगा ना, उसको कैसे जीतोगे? तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है हमें समझना दैट देयर विल बी ग्लिचेस, देयर विल बी ट्रबल, बट विथ लेट्स ट्राई फाइंडिंग एडवांटेज आउट ऑफ दैट एंड देन गेटिंग अ सॉल्यूशन फॉर इट. आई होप इट विल गिव यू अ बेटर इंसाइट on things per se. Now see, yes, a comparative idea is what we are trying to do here, and then what has been done in the last 8 years. Then what is this trust-based confidence? Efficiency in investors' confidence. That is, investors should be confident that sudden law changes will not happen. जैसे 2021 में government removing retrospective tax burden, ये एक अच्छी बात है. ये करने से आप इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस कर देते हो कि आप चिंता मत करो, आपके ऊपर उल्टा पुल्टा रूल नहीं लगाया जाएगा, आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दिया जाएगा, सिंगल विंडो दिया जाएगा. और इसी के लिए अगर तुमने मेरे बजट की डिस्कशन देखी, तो इसी के लिए मैं कभी कभी हमारे अभी के सरकार को क्रिटिसाइज करता हूं कि अनाउंसमेंट कर देते हैं, फिर उस पर वर्क नहीं करते. 2 बैंक प्राइवेटाइज होंगे, किया नहीं. बीपीसीएल प्राइवेटाइज होगा, किया नहीं. तो ये जो हम करते हैं ना, ये हमें शायद थोड़ा बचना चाहिए. वी शुड नॉट मेक अनाउंसमेंट्स अनलेस वी आर नॉट सर्टेन. दैट इज डिफिकल्ट, दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर एफिशिएंसी इन इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस. वो ट्रस्ट को हिलाता है. और ये मैंने तुम्हें प्राइवेटाइजेशन का एग्जांपल दिया क्योंकि मैं दे चुका हूं बजट में. और भी चीजें हो जाती हैं, जैसे अगर अडानी को लेकर इतना अप्रोर था, गवर्नमेंट कुड हैव गॉन फॉर अपॉइंटिंग एन इन्वेस्टिगेटिंग कमिटी टू चेक इफ समथिंग रॉन्ग हैज हैपेंड. उससे ट्रस्ट बनता है लोगों में. यू नो, दैट इज द आइडिया. Then better ease of doing business, that is by simplification of rules, improvement of legal mechanism, improvement in retrieval. कि अच्छा ठीक है, कहीं फंस गए हैं, कोई दिक्कत आ रही है, तो रिप्रीव कैसे मिले. मान लो कोई गलती हो ही गई, मैं टैक्स पे करना भूल गया, तो कम से कम मुझे कुछ पेनल्टी देना चाहिए कि ठीक है पे कर सकते हो. ये नहीं कि मैं सीधा जेल चला जाऊंगा या मुझ पर केस आ जाएगा ट्रिब्यूनल से. ये सब ना हो अगर, दैट इज बेटर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. मोर इफेक्टिव गवर्नेंस इज how you are delivering your governance. और इसीलिए आपके जो last mile deliverers हैं, the block development officers, पटवारीज, people working on the ground, ये बहुत जरूरी लोग हैं, because that is your better governance. I can make a policy sitting in North Block or sitting in South Block, but somebody got to implement it on the street out there in a village, and that person will be the secretary to the village panchayat. These are all government appointed bureaucracy people, जो lower level bureaucracy में है. तो अगर ये लोग अच्छे से काम करने लग जाएं और इनको guidelines मिले ऊपर से, like say the deputy secretary, the district magistrate and so on, then the ease of doing business improves, and that will result in more effective governance and ease of doing business coming together and developing India. सरकार का यही काम ही है, governance, govern करे तरीके से, और वो governance implement हो ठीक से, and that is why lower level bureaucracy has a very important role to play in such activities. Then of course we talk about what are the reforms that the government has taken in the last 8 years. Economic survey goes about that. What are the reforms that have been taken? Insolvency and Bankruptcy Code Act was passed in June 2016, and it was implemented from June 2017. So last 4-5 years we have done better there. When we say honorable exit mechanism for honest business failure, अब मान लो कोविड पैंडेमिक आ गया, ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक लग गया, सडनली ऑयल के प्राइस गिर गए और मेरा बिजनेस ऑयल का ही था, तो मैं बिना मेरे ज्यादा गलती के नुकसान में आ गया हूं. अब आइडियली मैं क्या चाहूंगा, जल्दी से मेरा बिजनेस बंद हो, मैं निपटारा करूं, वर्कर के ड्यू पे करूं, क्रेडिटर के ड्यू पे करूं, जो कैपिटल बचता है निकालूं और कहीं नया बिजनेस शुरू करने की सोचूं. लेकिन अगर मेरे लॉ ऐसे रहेंगे जो मुझे 8-10 साल के लिए फंसा के रख लेंगे, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा. So if I get a law which can release myself quickly, if I have made a loss, then I will be much better off when it comes to doing business in any country. So this improves ease of doing business. If I have made an honest loss, I have made an honest failure, if I am not a willful defaulter, I want to exit, I will have confidence, okay, there is a time-bound method by which I can exit. Because in Insolvency and Bankruptcy Code, the defaulter has the criteria, they can renegotiate their insolvency, talk for 6 months, extendable to 9 months, reach a conclusion, and then plan their insolvency accordingly.
Also, as I just told you, credit locked into stressed assets. जब तक कंपनी का निपटारा नहीं हो रहा, अब उसके एसेट भी नहीं बिक रहे, उसकी जमीन भी वैसी ही फंसी हुई है, मशीन फंसा हुआ है उस कंपनी में, लेबरों को पता नहीं कि पैसे मिलेंगे, नौकरी बची या गई, क्या हुआ. So insolvency and bankruptcy code speeds that up and makes sure that the resources are released quickly and from the stressed assets that they had become. Of course, it is market driven because all auctioning will happen in the market. Company will be sold in the market. So chances that there will be a forcible selling or any quid pro quo between government officer and businessman, all that gets minimized. And that attracts new investors because they are happy that now there is ease of exiting the business. So in case I am doing any mistake and I make a loss, I will not get stuck up in the country. So that is the benefit that we talk about of insolvency and bankruptcy code. ऐसे ही इकोनॉमिक सर्वे दूसरी बात करता है रेरा की, that is Real Estate Regulation Act. Now रेरा again is something quite good. 2017 it was passed. जो भी हमारे हॉच पॉच हो रखा था रियल एस्टेट बिजनेस में, इधर का पैसा उधर लगा देते थे, एक प्रोजेक्ट अनाउंस करते थे, उसका आधा बिल्ड करते थे और उसके जो पैसे आ रहे हैं दूसरा प्रोजेक्ट अनाउंस करके उस पर लगा देते थे, अपने जो उनके क्लाइंट्स हैं उनके पैसे खा जाते थे. सरकार ने इसको ठीक किया. Until you don't have clarity of land, you can't build and construct. All the money that you are taking for construction of a project will have to go to an escrow account meant for that project only. All buyers will have to be taken into confidence if any change is brought about in the construction program. तो इससे क्या हुआ, बायर्स को कॉन्फिडेंस मिलता है मेरी भी चलेगी, और अब मैसेज मिल गया बिल्डर्स को और कॉन्ट्रैक्टर्स को कि मैं धोखा दूंगा तो रेरा के एक्ट के अंदर में मुझे सजा मिल सकती है, मेरे प्रोजेक्ट बंद किए जा सकते हैं. So this was a benefit part. That is why culture of transparency in real estate, registering real estate broker agents that helped in making sure black money can be controlled, and mechanism for speedy redressal of dispute. अगर buyer में और seller में कोई dispute है, they can go under RERA and go to the tribunal NCLT, try getting it resolved. And then single window clearance for timely approval of all projects, and every state government has to establish its RERA office where the single window clearance can be given. But few problems persist. अब ये सर्वे हमें नहीं बताता पर हमें पता होना चाहिए. Few problems persist. One, lack of clarity of land holding. ये एक प्रॉब्लम परसिस्ट करता है. किसकी जमीन कौन सी है, दिस इज ओनरशिप राइट, इस पर अभी भी प्रॉब्लम है. दैट इज वन. सेकेंड, लैक ऑफ प्रॉपर लॉ फॉर लैंड पूलिंग. अगर कुछ लोग मिलकर अपना लैंड एक जगह पूल करना चाहते हैं, उसके लिए अभी भी हमारे यहाँ कानून सही नहीं बने हुए हैं. सही मतलब proper rules, regulations, well established, clarity of language, so that people can be confident that I can enter into contract with some others, 10, 12 people can come together. If everybody has 1 acre land, now it becomes a 12 acre land pool and business can be promoted like that. ये manufacturing development के लिए भी ज़रूरी है, सिर्फ real estate के लिए नहीं. Then the third thing we still see is lack of स्पीडी रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट. लैंड के डिस्प्यूट में आप एक बार फंस गए तो आपका ग्रैंड चाइल्ड जो है वो उसका निपटारा देख लेगा. ये हमारे यहाँ की दिक्कत है, तो उससे लोग डरते हैं अभी भी. लैक ऑफ स्पीडी रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट, सो नोबडी वांट्स टू देन ट्रांजैक्ट इन लैंड. दैट बिकम्स द चैलेंज फैक्टर दैट कम्स इन. तो ये एक प्रॉब्लम है. ये रेरा के जो दिक्कतें हैं रेरा के बाद भी वो देखने को मिल रहा है. And of course, government will have to bring legislative reforms to improve upon it. ये sensitive issue बन जाता है क्योंकि जैसे ही आप legislative reform लाएंगे, आपके opposition बोलेंगे ये सूट बूट की सरकार है. So that becomes a problem part. But you do need legislative reforms to overcome these issues. This is very important. ये मैं तुम्हें बजट में पढ़ा चुका हूँ, इसलिए इस पे ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा. But this is decriminalization of economic offences under Companies Act 2013. तो अब सिविल लाइबिलिटी लगेगी फॉर सिंपल डिफॉल्ट एंड नॉट क्रिमिनल लाइबिलिटी. तो लोगों का जेल नहीं जाना पड़ेगा, वो सब खतरा नहीं है. तो कॉन्फिडेंस होगा कि बिजनेस करें. नहीं तो लोग डरते थे कि कोई निर्णय लेंगे, कोई गलती हो गई, सीधा जेल जाने की नौबत आ जाएगी. सो दिस इज वन थिंग दैट हैज बीन गुड.
Another is 1400 default cases have been settled outside the court because of simplification of laws, and 4 lakh companies have been reforming themselves, correcting their problems on their own. They have recognized that we have done defaults in the past. Now the laws have been changed. Now we are willing to accept those defaults, accept the problems, and rectify our situation. These are all good decisions that we have taken. This is all you can write in ease of doing business. ये सारे आंसर लिख सकते हो. अगर कोई पूछते हैं what has the government done for ease of doing business, ये बातें आ सकती हैं उसमें. Then the next thing is we have changed the taxation ecosystem. First is unified GST, that is reduces cascading effect, promotes formalization, improves मूवमेंट अलॉन्ग स्टेट्स. पहले लोग जानबूझ के उन्हीं स्टेट्स में अपने वेयर हाउस बनाते थे जहां प्रोडक्शन होता था, क्योंकि इंटर स्टेट मूवमेंट पे टैक्स लगता था. अब लोग अगर मानते हैं कि प्रोडक्शन एक स्टेट में करूं, वेयर हाउस दूसरे स्टेट में बनाऊं, IGST दे दूंगा और इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लूंगा. तो GST ने ये इंप्रूवमेंट दिया लोगों को. सो विद GST बेटर वेयर हाउसिंग फैसिलिटी डेवलपमेंट, improving movement along the state, the taxes on state border have been removed, it has been brought under GST. It promotes formalization of the economy per se, because now everyone has to register themselves under GST. Similarly, reducing corporate tax rate, इसकी चर्चा बजट में कर चुका हूं तो दोबारा नहीं बोलूंगा, लेकिन याद रखना पिछले 4 सालों में 2019, 22, 23 और 23, 24 corporate tax rates have gone up by 3 lakh crore. Income tax rate has gone up by 1.3 lakh crore. 4-4.5 लाख करोड़ का तो सिर्फ डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, जबकि इतने से GDP नहीं बढ़ी इस प्रोपोर्शन में. So that is tax buoyancy in corporate tax rate and income tax rates that we have done. So reducing corporate tax rate, इनके 3 advantages हैं. Better tax collection, incentivizes investment, and promotes better confidence due to rational tax. That is, giving people rationality. You don't have to do efforts to get exemption. Government allows you 22% tax rate if you are not taking any exemption. So that is the basic understanding there. Then we go further. The next part is, which I was just telling you, buoyancy of GST has been higher than the old regime. Corporate tax collection has increased on year-on-year basis. Tax collections have been high. As I told you, tax collections have increased. Tax collection has increased from 14 lakh crore in 2017-18 to 23 lakh crore by 2022-23. So there's something interesting that we are looking at, that we are having some high tax collection at the moment. Compliance has improved. More people are now reporting tax. जब GST की शुरुआत हुई थी तो उस समय में there were 70 lakh people who were registered under it, 7 crore people who were registered under it. Now there are 14 crore people who are registered under it. Now that shows some improvement in 70 lakh people registered under it, and now 1 crore 40 lakh people registered under it. That shows some improvement in GST. You bear with me, I mixed up between millions and lakhs. Now next is, it is improving fraud detection, because with GST, with e-tax payments, there is a trail which is getting created. आपने एक जगह टैक्स दिया, रिकॉर्ड हो गया. अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 डिपार्टमेंट्स हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, CBDT एंड CBIC, ये दोनों में इंफॉर्मेशन नेटवर्क ऑफ एक्सचेंज होता है.
तो इनको एक पोर्टल पे लाया गया, आपस में एक्सचेंज करते हैं, तो रियल टाइम डेटा मिल जाता है कि अच्छा ये एक तरफ डायरेक्ट टैक्स नहीं दे रहे जबकि इनडायरेक्ट टैक्स तो इनकी कंपनी से इतना जा रहा है, तो उनको ट्रेस किया जा सकता है कि भाई तुम्हारा डायरेक्ट टैक्स कहाँ है, क्यों नहीं आ रहा तुम्हारे पास से. सो दैट इज इंक्रीजिंग कंप्लायंस एंड इंप्रूविंग फ्रॉड डिटेक्शन. एंड देन देयर इज फेसलेस असेसमेंट सिस्टम, इन विच केस देयर इज नो फिजिकल इंटरेक्शन, and that results in reducing tax evasion, removing corruption. People will have at least make sure that you don't meet your tax inspector, and that means it is done facelessly and assessment is better, plus corruption can be controlled. Then we see promoting private sector as co-partner in development, promoting private sector as co-partner in development. That is how private sector has been improved, brought into this. So government's disinvestment policy has been revised. Stake sale, that is government is selling almost all its stake at times. This is also called strategic disinvestment. जैसे एयर इंडिया का 100% से स्टेक बेच दिया सरकार ने, तो स्टेक सेल. एंड देन देयर इज लिस्टिंग ऑफ PSEs ऑन स्टॉक मार्केट. व्हेन वी से लिस्टिंग ऑफ PSEs, व्हाट डज इट डू? इट क्रिएट्स ट्रांसपेरेंसी. जब आप इनको लिस्ट करते हैं तो आप इनको सेबी के अंदर लाते हैं. जब आप सेबी के अंदर लाते हैं तो ट्रांसपेरेंट बनता है सिस्टम. अकाउंट बुक्स आर चेक्ड, ऑडिटेड रिपोर्ट्स आर सबमिटेड, एंड दैट इज लिस्टिंग ऑफ PSEs. ऑल्सो दैट अलाउज प्राइवेट सेक्टर टू बाय द शेयर्स ऑफ PSE, डेवलप्स अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेशन. And then the survey says that during fiscal year 15 to 23, 4.07 lakh crore realized from disinvestments. Give example of Air India. I give you another example, नीलांचल इस्पात, जो एयर इंडिया के साथ ही बेचा गया था. इसमें मुझे बस एक दिक्कत है, जब सर्वे कहते हैं ये बेचा गया 2.9 lakh crore rupees in this is public sector companies buying government share in public sector companies. तो ये कार्तिक कॉलिंग कार्तिक हो गया. सरकार की कंपनी सरकार के शेयर सरकार से खरीद रही है, तो थोड़ी गड़बड़ बात है. तो ये क्लेम पब्लिक से ये सर्वे कर सकते हैं, लेकिन ये क्लेम जायज नहीं है पूरी तरह से. हमने रियल सेंस में डिसइन्वेस्टमेंट नहीं किया. इट्स नॉट दैट वी हैव disinvested and broadened the scope of the market and increased the ownership system. We have not done that. It's HPCL taken over by ONGC story that we have done, or IDBI taken over by LIC. तो हम ऐसे काम हरकतें पे उतरे हुए हैं. मुझे लगता है सर्वे की ये बात पूरी तरह जायज़ नहीं है कि हमने इतना डिसइन्वेस्ट किया. अब देखिए वो डिसइन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट है. ऑफ कोर्स एयर इंडिया को प्राइवेटाइज किया, नीलांचल इस्पात को प्राइवेटाइज किया, फिर 2022 में डर गए, कुछ भी प्राइवेटाइज नहीं किया. ये मुझे लगता है अगर हम मोमेंटम बना के रखें, काफ़ी सारी कंपनीज हैं जैसे स्कूटर्स इंडिया, अगर हम उनको प्राइवेटाइज करें तो हम ज़्यादा राइट ट्रैक पे होंगे. सो आई थिंक वी कैन प्राइवेटाइज सच कंपनीज एंड गो अहेड इन मोर एफिशिएंट डायरेक्शन. ऑफ कोर्स ये अनाउंसमेंट हुआ है 2023 से 22 से, that government will be limited to strategic sector. August 2021, the notification came that government will be limited to 4 strategic sectors, which will be atomic energy, atomic minerals, space research, defense production, that is 1. Banking, insurance, finance, that is 2nd. 3rd is energy, electricity generation, electricity distribution, oil, coal and other minerals. And 4th is telecom and transportation. ये 4 चीज़ों को सरकार ने अब बोल दिया है कि वो रजिस्टर करके रहेंगे, इन्हीं 4 में रखेगा पब्लिक सेक्टर, और धीरे धीरे बाकी जगहों से पब्लिक सेक्टर निकल आएगा. लेकिन वो कितना धीरे होगा और वो कब होगा, इसका कोई टाइमलाइन नहीं दिया, कोई मैप नहीं दिया, तो हमें पता नहीं कि ये कब होगा. बट सरकार कह रहे हैं ऐसा होगा फ्यूचर में. चलो सुनने के लिए अच्छा है. अभी जैसे हो जाएगा तो इसका मतलब हमने फिर कुछ सही का रिफॉर्म देख लिया. 91 के रिफॉर्म में और अभी के रिफॉर्म अनाउंसमेंट्स में यही फर्क है. 91 में रिफॉर्म हुए, 6-7 साल लगातार चले. अभी हम अनाउंसमेंट करते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर अनाउंसमेंट करते हैं, रुक जाते हैं, फिर कभी कुछ चीज़ों पे पीछे भी चले जाते हैं. तो ये एक थोड़ा फर्क है. मे बी वी कैन इम्प्रूव अपॉन दैट एंड दैट कैन गेट अस सम बेटर रिजल्ट. अनदर इज स्टेप्स टेकन टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग अंडर आत्मनिर्भर भारत. Production linked incentive scheme, and survey has talked quite a bit about it, that domestic and foreign investment to develop global championship in manufacturing, boost production, exports, employment creation and government policies. Replicating South Korean and Taiwan model is supporting domestic companies,
through tax benefits, subsidies, import duty increase, marketing support, etc., to assure that they become globally competitive. Now that model just might help, that model just might help, but it is important that when we do this model, transparency is maintained and an autonomous body is created to take decisions, because it also creates the threat of nepotism, it also creates the threat of manipulation. So the model seems good, it happened in South Korea, it happened in Taiwan, but the effective idea is that it has to be made more efficient along with doing things across. So that is another thing that you need to keep in mind. Now see, for redevelopment projects the area is not clarifying. Fair enough, Akash. आशी आप मुझे पूछ रहे हो क्लास कब तक चलेगी, चिंता ही मत करो, तुम्हें जहां भी जाना है चले जाओ, ये यूट्यूब पे हमेशा चलेगी 50 साल बाद भी, तो कोई चिंता ही मत करो, जहां जाना है वहां चले जाओ, जो भी इंगेजमेंट है, कोई भी आप में से चिंता मत करो, मैं थोड़ा ये खत्म कर लूंगा, लेकिन आपकी बाई चांस कोई क्लास है या खाना खाना है या कुछ और मीटिंग है तो अटेंड कर लो, मतलब चिंता मत करना उस बात के लिए. Alright, this will remain on YouTube always. Alright, then the next thing is FDI norms have been liberalized. That is of course true. We have liberalized FDI in railways, FDI in defense, we have liberalized FDI in e-commerce, we have liberalized FDI in output production, generation capacity and so on. तो FDI तो definitely बहुत liberalize हुआ है और इसीलिए FDI का inflow भी बढ़ गया from 2.2% of GDP between fiscal year 5 to 14 to 2.6% of GDP between 2015 to 22. In fact, 2022-23, the FDI inflow in India was $84.6 billion. That was the 7th highest in the world. And that was the highest among emerging markets except China. So that shows some good growth in India, no doubt about it. So the FDI is coming in. यहाँ चिंता का बस एक विषय है, FDI आ तो रहा है या आने की बात तो हो रही है, लेकिन on the ground बहुत सारे projects start नहीं हो पा रहे. So government should be a little careful about that if FDI is coming to India or the promises are being made, the memorandum of understanding is being signed, why is it not operating on the ground, why it is not that successful on the ground. Then of course the infrastructure creation, we have talked about it already. Government has come up with national logistics policy और ये बात मैं आपसे ज़्यादा करूँगा जब chapter 7 पढ़ाऊँगा, chapter 12 पढ़ाऊँगा, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें होंगी ज़्यादा. अभी के लिए आप बस इतना समझ लो कि हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी है, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी आई है, डिजिटल सिस्टम बनाया जा रहा है, मेकिंग श्योर दैट रियल टाइम इंफॉर्मेशन रिमेन्स अवेलेबल. ये कोशिश की जा रही है दैट नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन बनाया जा सके. तो गति शक्ति, national infrastructure pipeline, national logistics policy, giving logistical sector infrastructure status, all that will definitely help in cutting down the logistical cost of production. So economic growth will be boosted because of that. ये होगा इसलिए because decrease in logistical cost improves capacity to compete. So this is again a reform that survey says has been done. अब तुम फिर एक बात नोटिस करना, हमने बात की steps taken to boost manufacturing in India. अब अगर तुम मेंस में आंसर लिख रहे हो steps taken to boost manufacturing, ये बातें याद रख लो. या प्रीलिम्स में क्या करेंगे, तुम्हें एक आधा इसमें से स्टेटमेंट दे देंगे और बोलेंगे that which among the following are the steps taken to boost manufacturing in India. और अगर तुम्हें ये याद रह जाती हैं चीजें तो मार्क कर दोगे which are the statements taken for boosting manufacturing in India. Then of course MSME reforms has been done. Emergency credit linked guarantee system,
in which MSMEs have been given collateral free loans up to rupees 2 lakh and the budget has been 5 lakh crore. Survey says that 2.38 lakh crore worth of loans have been given in the last 2.5 years itself, and more than 14 lakh MSMEs have been beneficiaries of it. That's a good news, because that means that the distress of COVID, this could be a factor that could improve on things. Then MSME definition revision, of course. Now we have expanded the definition of investment. We have also included turnover in the MSME definition, and we have also made sure that goods and manufacturing and services distinction has been removed from MSME definition. तो MSME के definition को improve किया गया है. ट्रेड रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम लाया गया है कि अगर कोई एमएसएमई का ड्यू है, कोई बड़ी कंपनी है जिनको पे करना है एमएसएमई को, तो एमएसएमई उस बिल को रजिस्टर कर सकते हैं ऑन ट्रेड रिसीवेबल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम पे. उससे ये क्लियर हो जाएगा कि ये पैसा बड़ी कंपनी से अभी इनको आना रहता है, तो उस बेसिस पे उन्हें लोन वगैरह मिल जाएंगे आराम से. सो ट्रेड्स इज वन सच पोर्टल. It's an electronic portal where MSME can put their bills of discount and then take loans on that basis, because it will assure that they have to receive money from elsewhere. And then ONDC we just discussed, that Open Network Digital Commerce. And then the government is making sure that there is GST network where recording of transaction takes place, and AA minus is bond credibility. MSME को ये AA minus का कैटेगराइज किया गया इन क्रेडिबिलिटी. जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने रेट किया है इसे. तो अब लोगों को पता है कि अगर एमएसएमई ने बॉन्ड इशू किया है तो उसके लौट के आने के इतने चांसेस हैं. सो दीज आर ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ रेजिंग मनी फॉर एमएसएमई विच विल इंप्रूव देयर क्रेडिट क्रिएशन. Alternative method of raising money for MSME which will improve their credit creation. लोन ले सकते हैं अलग अलग जगह से. MSME की मेजर दिक्कत है क्या है इंडिया में? मार्केटिंग की दिक्कत है, ONDC सॉल्व करेगा. क्रेडिट की दिक्कत है, GSTN एंड AA माइनस सॉल्व करेगा उसको, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज वैल्यू दे रही हैं. मैन्युफैक्चरिंग को अपने जगह तक पहुंचाने की दिक्कत है या लॉजिस्टिक्स की दिक्कत है, तो वो लॉजिस्टिकल पॉलिसी सॉल्व करेगी. दिस इज व्हाट इज द बेसिक आइडिया. अच्छा, साइज ग्रो नहीं करता उनका. जैसे 3 साल पहले इकोनॉमिक सर्वे ने कहा था ड्वार्फ हैं, बौने हैं, छोटे नहीं हैं. तो ड्वार्फ होने से अब धीरे धीरे स्मॉल बनाएंगे. कैसे उनको? कि उनको बोला कि आप थोड़े बड़े भी हो जाओगे तो भी आपके बेनिफिट्स बनी रहेंगी. अर्लियर 10 कंपनीज विद 10 लाख रुपीज वर सेट टू बी माइक्रो. नाउ इट इज 1 crore इन्वेस्टमेंट विच इज सेट टू बी माइक्रो, एनहांसिंग देयर इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी एंड ऑल. सो दिस इज अबाउट MSME protection that the firms are willing to do. Then of course we talk about financing productivity in agriculture, but what I am doing is we will give it a break today over here, and I will begin from here tomorrow, teach you this, and in the third lecture then cover the third section starting on fiscal policy in India. So you digest this much today. Tomorrow again I will see you at 1 o'clock and we will begin from here. We will cover this up further and then talk to you on taxation mechanism. I am not left with much here. It will not take us more than 25-30 minutes tomorrow, and then the next 45 minutes or tomorrow we will spend on a third chapter when we meet. So thank you. Have a great day. Bye bye.